Hello friends, welcome to Swarn Biology. This is Dr. Swarnima Mishra, and today we are going to study about the classification of the phylum Coelenterata with some interesting examples. In the previous series of this Coelenterata, we have discussed about its general characteristics. And today we are going to study about the classification of this phylum Coelenterata. So let's start. Now, the phylum Coelenterata has been divided into three classes. Class 1 is Hydrozoa. Class 2 is Scyphozoa. And class 3 is Anthozoa. Okay. So these are the three classes. Class 1 is Hydrozoa, class 2 is Scyphozoa, and class 3 is Anthozoa. Now let us see some examples of these classes. Now class Hydrozoa has examples like Hydra, Hydra actinia, Obelia, which is commonly known as the sea fir, and one second, my writing is not very much good on this, but I'll make it readable. Okay, and another example is Phycelia, which is a Portuguese man of war. Okay, so these are the examples of the class Hydrozoa: Hydra, Hydractinia, Obelia, and Phycelia. Now we come to the next class of this phylum, which is the Scyphozoa. And its examples are as follows. First, we can see as Aurelia, which is commonly known as the jellyfish, Cynia, and Rhizostoma. These are the three examples. There are many more, but I have taken the selected ones. Then we come to the third class, that is the Anthozoa. Now this Anthozoa class of phylum Coelenterata, they have members of corals as well as of the sea anemones. Okay, so why the class Anthozoa? They consist of two types of members. They consist of the coral members. Some of them are the coral members and some of them are sea anemones. Now, how this division takes place in this class? So, this is because members of this class, they have some members, they have exoskeleton, and some does not have that exoskeleton. So we can say with or without exoskeleton, this division has been taken place on the basis of exoskeleton with or without. So these corals, they consist of calcareous exoskeleton, whereas these sea anemones, they are without exoskeleton. Okay, means they have exoskeleton and they don't have exoskeleton. These sea anemones, they are without exoskeleton, and means this is whole. I am writing in short. This is exoskeleton whole, and so these corals, they have exoskeleton, and that too, which is made up of the calcareous. That is the calcium carbonate, or we can say the limestone. It's
skeleton is made up of the calcareous or the calcium carbonate, whereas the sea anemones, they do not have the exoskeleton. Then the question arises that how they shape, structure and movement, how they maintain their body, these sea anemones. So they rely on hydrostatic skeleton. What does this means? Hydrostatic skeleton means that these sea anemones of the class Anthozoa, they are under the influence of water, or we can say that pressurized water. So this water, it maintains its movement, its shape of the these anemones. This circulating water, it helps them to retain their shape or the structure. Whereas these corals, they have the well-defined exoskeleton which is made up of the calcareous exoskeleton. So, the example of this class Anthozoa, or consisting of the sea anemones, are the Adamsia and Metridium. Whereas the corals of the class Anthozoa, they consist of the examples like Tubipora. Tubipora is commonly known as the organ pipe coral. Okay, it is commonly known as the organ pipe coral. And another example is Heliopora. Heliopora is the blue coral. It is the blue coral. Another example is Gorgonia. That is the sea fan. Gorgonia is the sea fan. Then we have the Corallium. Corallium is the red coral, commonly known as the red coral. Then we have Pinnatula. Pinnatula is commonly known as the sea pen. It is commonly known as the sea pen. And the last is Renilla. Renilla is commonly known as the sea pansy. It is commonly known as the sea pansy. Okay, so these common names are also very important. We should remember the actual name as well as the common names of these organisms. So what we studied is that कि जो phylum Coelenterata है, ये 3 classes में divide होता है. It is divided, 1 minute. ओके, सो ये जो फाइलम Coelenterata है, ये 3 क्लासेस में डिवाइड होता है. और जैसे 3 क्लासेस कौन कौन सी हो जाती हैं? पहली हमारी हो जाती है हाइड्रोजोआ, दूसरी है हमारी स्काइफोजोआ और तीसरी है एंथोजोआ. तो जो हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं वो ये सारे हैं जो अभी हमने पढ़े. उनके कॉमन नेम्स भी, कुछ कुछ के कॉमन नेम्स भी हैं. क्लास स्काइफोजोआ के एग्जाम्पल्स ये सारे हैं. और क्लास जो एंथोजोआ है वो, उसके एग्जाम्पल्स 2 में बट जाते हैं. कुछ कोरल्स में मेंबर्स आ जाते हैं और कुछ सी एनेमोन्स में मेंबर आ जाते हैं. तो ये जो डिवीजन होता है इनके क्लास का, कुछ मेंबर्स कोरल्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, कुछ मेंबर्स सी एनेमोन्स में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन है, कुछ मेंबर्स में एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, कुछ मेंबर्स में नहीं पाए जाते. जैसे कि जो कोरल्स हैं इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है. और कौन सा, मतलब किस टाइप का एक्सोस्केलेटन होता है? वो कैलकेरियस. कैलकेरियस मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट से, लाइक लाइमस्टोन से बना होता है एक्सोस्केलेटन उनका. और जो सी एनेमोन्स होते हैं इनमें कोई भी
एक्सोस्केलेटन देखने को नहीं मिलता। तो कोरल्स में तो एक्सोस्केलेटन है, तो ये अपने बॉडी के शेप को मेंटेन कर लेते हैं, मूवमेंट को, और बाकी सारे इनके जो फीचर्स है वो सपोर्ट जो एक प्रोवाइड होना चाहिए बॉडी को, वो एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करता है, और वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। लेकिन सी एनेमोन में क्योंकि एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर, शेप और जो एक सपोर्ट होता है बॉडी को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो कैसे इन्हें मिलता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं ये। तो इनका जो मूवमेंट है और जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है बाय हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो, क्योंकि ये मरीन होते हैं और पानी में रहते हैं ये, तो जो वाटर इनकी बॉडी में जाता है, जो प्रेशराइज्ड वाटर होता है, मींस जो भी वाटर इनकी बॉडी में जाता है और इनके कैविटीज़ में, तो वहाँ पे ये जो वाटर है ये मेंटेन करता है उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को, शेप को, मूवमेंट को, और बहुत सारा जो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है वो इस प्रेशराइज्ड वाटर की वजह से ये सी एनेमोन्स अपने आप को रिटेन कर पाते हैं और एक बैलेंस बॉडी में बना रहता है। तो इसीलिए ये जो है सी एनेमोन्स के डिवाइड हो जाते हैं, सी एनेमोन्स जो कि विदाउट एक्सोस्केलेटन है, और कोरल्स जिनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सी एनेमोन्स के, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने कॉमन नेम्स के साथ कोरल्स के पढ़े। So this was all about the classification of the phylum Coelenterata, and please go through the lectures, and I hope that you will understand. And this is the second lecture of the series of the Coelenterata. And before that, we have completed one series of phylum Porifera. You can go and see the lectures, and next we'll discuss again in this series of Coelenterata other topics also. So keep watching and keep studying. Do like, share and subscribe, and thank you so much.